तुम्हारा नहीं है, वन थिंग। राइट। सो जहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब अच्छा, श्रील भक्ति ठाकुर के साथ श्रील भक्ति ठाकुर का क्या डिफरेंस, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द ಇಲ್ಲ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट हम्म इज द डिफरेंस बिटवीन श्रील भक्ति ठाकुर एंड श्रील भक्ति ठाकुर? ಸೇಮ್ What is the difference और between उनका Prabhupada इतना Srila Saraswati Goswami Thakur, and what is the difference between Prabhupada Srila Saraswati Goswami Thakur and Prabhupada Srila Saraswati Goswami Thakur? एक ही चीज। Then देखिए, if अगर हम लोग दो गुरु भ्राता हैं तो हम क्या कहेंगे कि तुम तुम्हारा फॉलो करो, हम हमारा फॉलो। किसका? एक ही गुरु तो एक ही है। नेक्स्ट, अगर दोनों का परम गुरु प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी हैं, अगर वहां पे कह रहे हैं तुम तुम्हारा गुरु का फॉलो करो, हम हमारा गुरु का, दैट मीन्स देयर इज ए डिविएशन समवेयर। और प्रभुपाद जी के पास जाएंगे तो वी कैन नॉट कंपेयर वन थिंग विद द सेम थिंग, राइट? तो जी मूल वस्तु से हम लोग डिबेट तो कर रहे हैं, इसीलिए हमारा डिफरेंस आ रहा है। नाउ यू आर थिंकिंग, ओके नाउ यू डू थिंग योर थिंग, आई डू माई थिंग। प्रिंसिपली अगर 2 + 2 अगर 4 है, 2 + 2 4, राइट? तो आपका उत्तर, आपका आंसर, मेरा आंसर सेम होंगे। If you say 2 + 2 is 5, if I say 2 + 2 is 3, then we don't know how to add, we don't know a formula. अगर मूल पुरुष प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी हैं तो डिफरेंस कहाँ से आए, कैसे, कहाँ से डिविएशन हुआ? श्रील भक्ति ठाकुर जी का भी कोई एक मतलब कोई शिष्य है। हाँ, मेरा एक मित्र है, उनका पिताजी ठाकुर महाशय का परंपरा में है। Now I did not meet his father, but the way he represents things so different. मैं वृंदावन गया था, वहां पे ठाकुर महाशय जी का एक आलेख मुझे मिला, और उनका शिष्य करके है। अब मैंने वो आलेख को उनको फोटो करके जब यहाँ वापस है भेज दिया उनको। ही वॉज वेरी हैप्पी, ओह दिस इज हिज फादर्स गुरु परंपरा, ठाकुर महाशय हैं। तो अगर उन्होंने उनका लाइन में कहेंगे ना हम लोग ये करते हैं, देन वी हैव टू सी वेदर वेयर इज द डिविएशन, क्योंकि दोनों श्रील भक्ति ठाकुर जी से आ रहे हैं, है ना? और जी श्रीमद् बृहद भागवतामृतम में हमने पढ़ा है कि शुद्ध भक्त इस जगत में रहे, या वैकुंठ में रहे, या ध्रुवलोक में रहे, या उत्तर मेरु बिंदु में रहे, नॉर्थ पोल में रहे, कहीं पे भी रहे, शुद्ध भक्त का एक ही विषय होगा। ये शुद्ध भक्त फ्रॉम हियर, शुद्ध भक्त फ्रॉम वैकुंठ, शुद्ध भक्त फ्रॉम ध्रुवलोक, शुद्ध भक्त फ्रॉम नॉर्थ पोल will speak the same thing, from another ब्रह्मांड will speak the same thing। डिफरेंस इसीलिए आ रहा है कि हम लोग शुद्ध भक्ति से दूर हैं, है ना? If we ask what is Newton's first law, everybody will have to speak the same thing. Now, if you say, no, that's what I have learned in my university, that's what our teacher has taught us. And then somebody say, no, I have different conception. That is not first law. This is the first law. I have learned this from my university. Then either of the universities or both of the universities are, we have to see where is the deviation from the Newton's first law, है ना? ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग, if we find difference and somebody is saying we are different, you are different, then we have to see where we are different and why we are different. Huh. जी। So the Okay. question is why you are first of all approaching me, like like for this preaching, like why you have chosen me for this thing? Who? ये Who जिस chose who?
like किसी से बात हो रही थी तो then he suddenly said like why you chosen me for this one. तो मैंने जो कहा कि we are God brothers and because your guru is a disciple of Swami Maharaj, so we're God brothers. So you have dhoti on, you have tilak on, so that's why I approached you to hear Sri Hari Katha. So let's listen from Srila Bhaktivinoda Thakur and whatever Bhaktivinoda Thakur has preached, uh, Janaratan Das Thakur and Vishwanath Chakravarti Thakur has preached, it is all same. There is no difference. So we are not like two parties. And then he said, and the same thing has to preached by Srila Prabhupada. Like he was referring to Swami Pad. So I'm just following him. I'm just listening to his lectures. तो वो नहीं आएंगे. No, ठीक है. Whether I have understood what Srila Sai Prabhupada said. उस विषय में तो जा ही नहीं रहे उन्होंने वो बस. तो नहीं जाएंगे तो हम क्या करें. हम घर में जब थे, I have seen many persons used to come our home. Sometimes they used to stay our home. एक बाबा जी आए थे वृंदावन से. उन्होंने रह गए बहुत दिन. एक रूम उनको दे दिया गया. Ours is not a big home, small home. In the village, and then उनको बहुत दिन दिया गया है. He was showing map of Braja, talking so many things. My father was speaking about, and then both were discussing nice. I have not seen any such differences. उनका पता नहीं उनका गुरुवर्ग कहाँ से है. उनको अच्छा लगा कि हाँ बाबा जी हैं, वृंदावन से आए हैं और वृंदावन का बात कर रहे हैं. I don't not seeing any Sahajiya thing or anything. बस we didn't have to find out everything. And that is one example. I had seen many people used to come. हमारे गांव में अगर कोई भक्त आते और बाकी लोग उनको हमारे घर भेज देते क्योंकि यहाँ पे मास्टर मसे हैं, वो भक्त हैं, तिलक सेवा है, कंठी है, हरिनाम करते हैं. तो सब हमारे घर भेज देते हैं. और they used to come stay. We did not see any difference. हाँ. दूसरा मठ से भी आते थे. श्री सौती गोस्वामी महाराज जी का शिष्य, हाँ, श्री माधव गोस्वामी महाराज जी का शिष्य, श्री केशव गोस्वामी महाराज जी का शिष्य, बहुत सारे भक्त आते थे. We never said, oh, you are from a different. I have never seen that. भक्तजन, I have never seen that thing at our home. आदर के सहित रखा जाता था. उनके साथ हमारा पिताजी भिक्षा में भी जाते थे. My mother and father used to go big with them from door to door to respect them. हाँ, उनको लेके हम this locality, the other locality. It's a big village, but there are lot of pada called pada, like local area. तो I used to be surprised कि हमारा माता पिता क्यों भिक्षा के लिए जा रहे हैं. हाँ, उनके साथ जा रहे हैं हरिनाम करके भिक्षा. हाँ, हमारे मठ से आए हैं, केशव गोस्वामी महाराज जी का मठ से आए हैं, माधव गोस्वामी महाराज जी का मठ से आए हैं, श्रोति गोस्वामी महाराज जी का मठ से आए हैं, महाविष्णु है, और भगवत सेवा के लिए भिक्षा दीजिए. एंड देन श्री चैतन्य मठ से तो आते ही थे दिसंबर, ड्यूरिंग दिसंबर, जनवरी, बैस पूजा से पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम दिसंबर. एंड देन विद देम वी यूज्ड टू गो टू अदर विलेजेस आल्सो. 2-3 रात उनके साथ जाते थे हम. So from our village, then they would go to Datina. From there, they would go to Bolpur. My father went further. We returned. We had not seen who is from which mod. Sometimes they are not from. They are not directly from Gaudiya Math. I have never seen Prabhuji. ये सब difference हमने नहीं देखा कभी. हाँ, ऐसा बात अलग है कि कोई सहजिया है, डिफरेंट है, देन माय फादर उतना. ठीक है, आप आइए, प्रसाद लीजिए, बैठिए. सम्मान किया, प्रणाम किया. लेकिन सहजिया लोगों के साथ तो ज्यादा नहीं. शुद्ध भक्त तो देखा तो हाँ ठीक है, सम्मानजनक है. तो what we see here now these days are so different. मैंने जिस घर में जैसे मतलब I grew up, हाँ, I have not seen this kind of thing, प्रभु जी. जी. तो organic I am giving हाँ. organic example. ठीक है. जी जी. I had not got this. So first time जब मुझे ये सब देखने को मिला वो था कानपुर. That was 1996.
1996. Before that, I had never seen this. 1996 कानपुर गए, वहां पे बहुत आनंद करके मैं मृदंग बजाने जाता था, और बहुत they used to love me so much, and slowly I found, oh, they are doing this, and slowly I found, oh, these things are happening. Oh, that's why nobody now comes to Yoga Pit. Oh, now I realize. Anyway, पर हमारे घर में कभी मैंने नहीं देखा। आप लोगों ने कहाँ पे किसको देखा हम पता नहीं। I did not have a friend from Brampton, Toronto, this that. I had doctors from Vrindavan, Mayapur, Puri Dham, basically. ठीक। Anything else on this? तो क्या करें प्रवीण भाई, अभी आसपास तो यही लोग हैं, तो हम क्या चुप करके बैठें या फिर क्योंकि यार इनसे ज़्यादा बात होगी तो अपना वो लोग खराब हमारा होगा। साध्य वस्तु नहीं है। साध्य वो भगवान। हम लोग उनका साधना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, भगवान साध्य वस्तु। हम लोग 4-5 घंटा हरिनाम करना पड़ेगा। 4-5 घंटा हरिनाम, 1 लाख हरिनाम के लिए समय नहीं है हमारे पास। हरिनाम करेंगे, 3-4-5 घंटा हरिनाम करें तो उतना ऐसे समय ही नहीं है हमारे पास। उसके बाद हरिनाम के समय हमें देखना पड़ेगा, योग्यता होना चाहिए, और महाप्रभु जी का जो दान है विप्रलम्ब भाव समझना चाहिए। अभी धीरे धीरे समझते समझते ये सब आएंगे। ऐसा होना चाहिए कि द नेक्स्ट मोमेंट इफ आई लीव बॉडी, आई हैव टू बी डिजायर फ्री ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड। एंड केवल मेटेरियल वर्ल्ड से डिजायर फ्री होने से नहीं चलेगा, तो न्यूट्रल हो गया। आई हैव टू हैव द डिजायर टू बी इन वृंदावन। If I have a desire to be in Vrindavan, then I don't have to wait to leave my body. Correct? जी। आप लोग चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो। You can stop me. You can add things. But I have to be ready that, oh, see, in childhood, I used to think, I'm now writing answers and my handwriting is not good because I'm not paying too much attention. I'm not, I don't care much how my handwriting is, how my answers are. That's fine. In the exam, I'll be writing very nicely. अच्छा से उत्तर लिखेंगे, सुंदर रूप में लिखेंगे, पैराग्राफ करके एक एक टॉपिक आंसर देंगे, है ना, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एटसेट्रा। तो उसमें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, अभी जरूरत नहीं है। वो एग्जाम के समय तो बहुत सुंदर रूप में लिखेंगे, 3 घंटा समय रहेगा। आई एम स्टडिंग वेल सो आई विल राइट द आंसर्स। उस समय मैंने एग्जाम में देखा, लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर मेरा हैंड राइटिंग इज लाइक, ओह इट्स हार्ड टू रीड। व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट प्रैक्टिस वेल। आई थॉट आई विल राइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम। दिस सिंपल एग्जाम, इट्स नॉट complicated or anything. जी। What I'm trying to accomplish with this example is that if I think after I leave the body, I don't want to come back, then that is mukti pipasa. उससे नहीं होने वाला। I have to have such a desire to be in Vrindavan. We are doing all that thing. That's necessary here. That's fine. However, not only desire free from this world, but desirous of being in Vrindavan. And being in Vrindavan ऐसा नहीं कि वहां जाएंगे और everything is unknown and then how we will be wandering there, knowing nothing. It's not like that. Being in Vrindavan, where in Vrindavan? Where will be our home? What will be our identity? Who will be there with us? Who I will be following? Who will tell us what to do? Right? And who will be around? And then what kind of services will be happening? Where I will be in the morning with whom? And then where I will be there later in the morning with whom? Where I will be in the noon, afternoon, everything. What I should be doing. अगर ये सब धारणा आएंगे, शुद्ध रूप में हम कभी ये सब आएंगे, कभी अगर आएंगे तो हरिनाम शुद्ध रूप में करेंगे, then we'll see that those are all now clear. And then we are not afraid that we are not waiting that after death something possibly will happen. Huh? Do you all agree? That is the platform of bhajan. I had seen my father. Bhatkar, I was talking and suddenly he closed eyes. He was not listening. So मुझे लगता, oh, I was telling this and explaining with greatly with depth and this and that. Oh, he was not listening last few minutes. तो आंखें बंद करके परिणाम कर रहे हैं, बस सामने बैठे हैं। I had seen many times, even while talking and not talking at that time also, always हरिनाम। तो ये इस स्थिति में अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग प्रचार का विरोधी नहीं है, वही आचार प्रचार हमारा, लेकिन वो हम लोग प्रचारक नहीं है।
आप लोग कहेंगे हाँ इसीलिए तो प्रचार नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ प्रीचर। पहले हमें मिलना तो चाहिए, जब तक नहीं मिले हम यही कह सकते हैं। देखो प्रभुपाद जी का यही उपदेश है, ठाकुर महाशय जी ऐसे कहा है, लाइक वी आर रीडिंग नाउ जीव तत्व, राइट? So that we get those clear. That is prachar. Prachar is not cooking nice, dancing nice, bringing more people, Gagan Chambi Mandir, skyscraper temple. It's not, those may be fine, but those are for what purpose? Pleasing Bhagavan to get jivas from here to Bhagavan's world. हमें ये वस्तु अगर हमें मिल जाएंगे कभी, then we don't have to wander here and there, right? We don't have to wander here and there. First, I have to take care of myself. अगर हम लोग सभी इसी प्रकार भजन करेंगे तो देखा जाएगा कि इसमें भजन में आकर्षण है। मे बी 4 hours 5 hours we are saying, may not be all the time, but sometime, maybe few rounds, maybe few minutes in those whole 4 5 hours, maybe a total of 5 minutes we'll be able to have that thing, and then slowly we'll realize everything. Like one day we were discussing about रूप। आप बोल रहे थे कि सभी जगह तो कहते हैं बहुत ही सुंदर थे, ये थे। हमें ये समझना चाहिए कि प्राकृत रूप, एवरीथिंग, प्राकृत रूप, प्राकृत रस, हाउ इज प्राकृत रूप कनेक्टेड, प्राकृत रूप किस किस प्रकार का रूप, हमें ये समझना चाहिए। अप्राकृत रूप कैसा है, प्राकृत रूप के प्रति हमारा जब तक आकर्षण रहेगा तब तक अप्राकृत रूप के संबंध में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। प्राकृत रूप रूप ही नहीं, ये जब समझ में आएगा देन व्हेन विल अंडरस्टैंड। Anyway, so इस जगत का कोई भी विषय, now what this person said, what that person said doesn't matter। हमारा ये बाजू में ये कुत्ता है, हाँ, and do we care what that dog is thinking, what the dog is barking about? No. Similarly, what animals are thinking, what humans are thinking, irrelevant। पहले आपने हमें भजन का इस स्तर में जाना चाहिए, उसके बाद क्लैरिटी आएगा, उसके बाद हम देख सकेंगे। जी थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग प्रचार विरोधी नहीं है, दिस इज द रियल प्रचार। इसके आगे ही जाके हम जंप करेंगे इधर उधर तो देखा जाएगा वी आर ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ दोज डिस्टर्बेंसेस, नॉइज। कोई कुछ कहेंगे? डू यू ऑल एग्री? जीव के लिए हमें उतना चिंता देयर वाज अ वेबसाइट, somebody was writing all that are happening wrong, and I thought, oh, maybe this person is doing good work. Then I went there and said, I found he is offending our, somehow he is offending our acharya। Then I said, oh, why are you saying this? श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी का ये श्लोक है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, केयरफुल होइए आप। Oh, he said, no, what did they do for us? What did your gurus do for us? That's what he said। श्री साईपाद जी का प्रशिष्य है संबंध में। तो मैंने, आप देखिए, आपके लिए हमारा गुरु क्यों कुछ करेंगे? क्या आप साध्य है क्या हमारा? हमारा गुरु भगवान के लिए करेंगे, to please भगवान। Why should they do for you and him and them and her? Right? Okay. Why should our gurus do anything for the humans here? Why? No, prachar to deliver us. No, that is a different thing. To be delivered, you have to worship them. You cannot question them, what have you done? अगर कोई बच्चा अगर आके कहेगा, पिताजी आप मेरे लिए क्या किया है, क्या किया आपने, क्या रखा पैसा, क्या सिखाया हमें, हमें अच्छा घर भी नहीं दिया, हमें पढ़ा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, हम पैसा भी आपने क्या किया हमने हमारा लाइफ के लिए, राइट? क्या वो इज ए गुड बॉय, गुड गर्ल? If the child understands, no, my father has done whatever is possible, I have not done my part, I have not listened to my father। जो भी दिया उन्होंने, जो भी उन्होंने शिक्षा दिया, गाइडेंस दिया, अगर हम अनुसरण करते, फॉलो करते, तो हमें आज आई वुड हैव स्टूड अप बाय व्हाटएवर, नथिंग एल्स इज नीडेड। Everybody doesn't have a very nice home, just to stay from, saved from rain and storm, right, and sun. That's all sufficient। Is a child who is obedient and grateful to his parents or her parents, that child is the that's the
that child is কি বলা হবে, is a good boy, good girl, huh? Learn it, he has got something. But these people are coming and saying, oh, what your gurus have done for us, why our gurus will do anything for you? Our gurus are not here to do anything for the world or anybody for the world. Baddha jivas, our gurus are there to serve Bhagavan. They sometimes they do acharan always, sometimes they do nam prem prachar. That is to please Bhagavan, to bring some of these Baddha jiv who are fortunate to take it to Bhagavan. Not for your liberation or anything, but for the pleasure of Bhagavan. और भी भक्त मिलेंगे, और भी भक्त भगवान का सेवा करेंगे नित्य धाम में, इसीलिए, बिजनेस के लिए नहीं। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? Why should our gurus do any, why is someone expecting that our gurus do anything for them? तो उसके बाद उन्होंने जो एक फ्रेज व्यवहार किया, यूज किया, उनका रिस्पॉन्स में किया था, वो आप देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। So anyway, I don't have to go there. So this is not preaching. We are not trying to make some big parties or something. If one person here comes to the position that while being in this body, in so-called way, conditioned position, but while being here, gets liberated so that he can do Shuddha Harinam and can enter into Golok Vrindavan, there is nothing comparable, nothing that can be compared with that state, that success. ये आप एग्री करते हैं? Who does not agree? If anyone is not saying anything, I will take it disagree. फंस गए हम सभी। If Unmute anyone is all, staying please. muted and not saying anything, that means they are disagreeing. No, I don't disagree with this fellow, so I will not say anything. agree. एग्री प्रभु जी। हाँ, Agree. ऐसा भजन करना चाहिए, ऐसा भजन करना चाहिए। आप लोग कोई आके हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें भी समझ नहीं है। हमारा गुरु महाराज जी, हमारा गुरु वर्ग के पास, इसलिए साईपाद जी के पास आके बताइए, हाँ आपकी कृपा से, हे इसलिए साईपाद जी आपकी कृपा से मैंने वृंदावन गया हूँ, सुंदर सुंदर लता वृक्ष पुष्प, यमुना गोवर्धन है, इवन हवा, द विंड, समीरन, and then the Brahmar, and then the deers, and of course then the Brajavasis. Yes, and I have been accepted by them. आप अगर कोई यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, इसलिए साईपाद जी के चरण में बताइए, हाँ, I have got a संबंध and I have become this, under this, then there is nothing comparable to that. यहाँ का बद्ध जीव को लेकर हम क्या करेंगे? यही बद्ध जीव आज मनुष्य है, कल कुत्ता हो जाएंगे, परसों एंट हो जाएंगे, कोई स्वर्ग में जाके कुछ दिन वहां स्त्री रूप में या पुरुष रूप में बहुत सारे भोग करेंगे, फिर उसके बाद पाप के लिए नरक चले जाएंगे। इन लोगों के लिए हमारा क्या इतना बिजनेस है? वी हैव नथिंग टू डू विद दिस बद्ध जीव, right? Nothing to do with this Baddha Jeev. And what is the evaluation of this Baddha Jeev? Baddha Jeev cannot evaluate what Srila Saipad ji said. Like you said, some people criticize. Nobody is criticizing it. Anybody criticizing, they are Narakgami. They are Naraki. Acha. Nobody is supposed to give any evaluation of Srila Saipad ji, what Srila Saipad ji did, what Srila Goswami Maharaj ji did. Evaluation, they are no one to evaluate. अगर उनका कोई इवैल्यूएशन करेंगे भी, नित्य धाम में प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इवैल्यूएट करेंगे, और वो भी पास फेल का इवैल्यूएशन नहीं, सेवा का इवैल्यूएशन, वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। What the dean, how the dean evaluates the professors? Is it visible to homeless people? Forget about even students, clerk, homeless people, residents who are residing near the university. Do they see how the dean has evaluated the professors? No. हाँ? वो नहीं। हमारा विषय नहीं। गया था मैं अभी यूनिवर्सिटी के आसपास, वहां पे लोग कुछ बसोती करते हैं। There are people who were smoking.
Are they going to talk about, oh, how the dean has evaluated the philosophy teacher, the history teacher? No, that is not even a topic to debate. They are not there. They are just thinking, how to earn money and then just live their life. We are like that बद्ध जीव. जिन जिन आचार्यों के विषय में हम कह रहे हैं, उनके विषय में हम उनका नाम लेने से पहले हमें सम्मान से लेना चाहिए. पूज्य पादों विष्णुपाद, नित्योल्या प्रविष्ट, परमहंस, आचार्य वर्ज, गुरुदेव, ये सब एडजेक्टिव लेने के बाद इन आचार्यों का नाम लेना चाहिए. उसके बाद और कुछ कहना ही नहीं चाहिए. जो लोग कहेंगे कि क्रिटिसाइज कर रहे उधर भी क्रिटिसाइज करें ना, वी आर देयर, नोबडी शुड क्रिटिसाइज. आई हैव टॉक टू मेनी पीपल. मैंने कहा प्रभु जी आपने वही किया जिनका आप जिनके विषय में कह रहे हो कि वो लोग हमारा आचार्य का अवमानना करते हैं, आप भी इसलिए साईं जी के चरण में अपराध करेंगे. वही वही सेम ग्रुप में चले गए आप. They have appreciated. Let us know. You are right. You saved us. I can invite a bhakta one day if you want. He said that you have saved my. I was wrong. I thought they are different group. We are different group, and because they are offending us, we can talk about Srila Sai Prabhupada. But you said no. If you do that, then you are also in the same path of Narak. आप उन्हीं के तरह हो गए कि प्रभुपाद जी का कोई शिष्य के प्रति आप ऐसा नहीं कह सकते. अरे श्री साईपाद जी बात ही अलग है. प्रभुपाद जी का जो शिष्य एक दिन के लिए भी शिष्य और गृहस्थ या जो भी, डजंट मैटर, उनके विषय में आपको सम्मान करना पड़ेगा. दे हैव एग्रीड दैट वी वर सेव्ड. हाँ, अगर कहीं पे देखेंगे कि इसलिए साईपाद जी के चरण में अपराध कर रहे हैं, यू कैन ब्रिंग देम हियर, वी विल डिस्कस. सिमिलरली किसी के चरण में कोई पार्टी नहीं है. इसलिए साईपाद जी इस्कॉन का नहीं है. इसलिए साईपाद जी गौड़ीय भक्त है. इसलिए साईपाद जी डिड नॉट टेक इनिशिएशन फ्रॉम इस्कॉन. So Saipatji took initiation from Gaudiya Math, right? जी. And he has served Gaudiya Math in Allahabad, in Mumbai, right? गौड़िया वैष्णव. आप लोग गौड़िया बोलने में आपका बिजनेस बंद हो जाता है, इसलिए आप गौड़िया नहीं कहते. It's up to you. Do your business. Stay here. Stay here. I had talked with my father. Oh, the chief minister is doing this and that. Of course, because my father was there. I now keep a lot of my eyes there. So the point is that this chief minister will be here in this Baddha Jagat. Today, she or he is chief minister. Next life, she will not be chief minister. Few years, she will not be a chief minister. In next life, definitely, she is not going to be chief minister, right? And then the chief minister may become a dog. Chief minister may go to Narak because of eating fish and eggs, right? So there is really nothing much. Anyway, so बद्ध जीव और बद्ध जगत को लेकर हम रह जाएंगे तो हमारा प्रगति कैसे होगा. हम बद्ध जीव ना तो हमारा साध्य वस्तु है, ना ये जगत हमारा साध्य जगत है. वैकुंठ साध्य जगत, वैकुंठ वैकुंठ का आदिवासी भगवान का सेवक, उन्होंने हमारा साध्य, उनका साधन करना चाहिए. जी.